Exam Prep brings to you the second All India Open Mock Test from 21st of October to 31st of October. Go ahead and register now in the BYJU'S Exam Prep app and compete against thousands of aspirants. Hi everyone, and very good morning to all of you. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Arpa Sharma and this is our weekly editorial analysis. I hope I'm clearly audible and visible to everyone. Thank you so much for joining us for this session. Good morning, Arya. If you could quickly confirm that I'm clearly audible and visible. Good morning, Rakhi, Preeti. Very, very good morning. So I've yet another article, and I hope you've seen yesterday's video. I hope you've learned something from yesterday's class. The article was tricky, and I'm absolutely good. I'm absolutely good, everyone. तो आज क्या लेके आए हैं क्लास में ये देखते हैं. But I've been bringing a lot of articles to you that are pretty interesting, pretty catchy. You would want to know what happens in the end. You would want to read on and on and on. But then it's not a necessity that you get interesting piece of article in the examination. And in the last class, if you remember, I had told you कि article interesting ना भी हो तो मुझे उसको इस तरीके से पढ़ना है, मुझे उसमें I have to be involved in it so much that I find that piece of article interesting because I have no choice. There are going to be 6 passages coming up in the examination and probably 9 nail it. That can happen with CLAT as well. So since I have no choice of leaving an article, why shouldn't I fall in love with whatever is given to me? On that note, I've brought an article for you that is certainly not very interesting. Okay? So it might be a little boring to you, but then if you're involved in reading that article, I'm sure you're going to love reading it by the end. Can you guess what the topic could be? What is one topic that you find boring? I'd like to know that from you. What is that one topic जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ना, बहुत boring लगता है? Yes, Shreya, it was. Yes. Not so, but a little more tough than usual. And that's necessary, Shreya. I hope you understand why is that necessary. Ashi, that's the whole idea. उसको ऐसे पढ़ना है, science, philosophy, economy, ऐसे कोई topic पे नहीं है. ऐसा कोई topic है ही नहीं. Topic is literature. ठीक है? Disease, you find that boring? I find it very interesting. So, आपको पढ़ना article ऐसे है, it's on literature. And some people might be bored कि यार मुझे literature पढ़ के क्या करना है, but of course literature पे एक passage आ सकता है, बहुत frequently आ सकता है. Literature has been one of the favorite topics for CLAT. तो आपको literature based article आज लेके आई हूँ. थोड़ा सा tricky नहीं है, but monotony है article में. So you have to find out how to read that so that you know and you don't get bored about the article. Okay? So, ठीक है. Literature is pretty interesting. Oh, that's what you find. Let's see if this article is as interesting as the other articles. So, एक article करेंगे, not two. We'll do one article on literature. Vocabulary, yes, there are plenty of new words here. तो वो words याद करने की कोशिश करेंगे. Inferences draw करेंगे बहुत सारी lines से. Apart from that, आपको एक काम और करना आज के आर्टिकल में. आपको फिगर ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है कि कौन-कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है कहां-कहां. I'll be highlighting a few lines for you जहां फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी. Of course, मेन आइडिया टोन ऑफ द ऑथर हम डिस्कस करेंगे. मेन आइडिया बहुत आसान है, टोन ऑफ द ऑथर आज का डिफिकल्ट है. ठीक है? So let's go on. You guys seem to be very happy with literature. And of course, literature is a very common article in CLAT. बहुत बार दिया है. देखो, literature कैसे इंपॉर्टेंट है? बुक रिव्यू, बुक के एक्सट्रैक्ट, ऑथर्स के बारे में, ऑथर्स की लाइफ के बारे में और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर इन 5 टॉपिक्स पे आए हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली देखे हैं हमने क्लैट और एलेट जैसी एग्जामिनेशंस में. इसीलिए आई कुड नॉट लीव दिस आर्टिकल एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी डूइंग इट. एंड बिफोर एनीथिंग एल्स, इफ यू plan to take more tests, we have a test series that we have launched.
and there's a lot of effort that we are putting behind these test series. There are a few free tests that are going on, including the All India Free Open Mock that you can take. Apart from that, if you need more tests, you could enroll yourself for the test series that we have launched. इसकी सारी details description box में है. And of course, October 31st आपका All India Open Mock का window close हो रहा है. Take it before the window closes. नहीं तो आप ये free test नहीं ले पाओगे. पेड हो, फ्री स्टूडेंट हो, ये टेस्ट आपको लेना है, बहुत जरूरी है, बिकॉज यू सी योर रैंक अमंग thousands of kids. All right, so here we go. Good morning everyone who joined me late. First page, जल्दी से पढ़ो, send me a done. क्या लाइन लिख दी है फर्स्ट लाइन में? अब आपको पता है what the article is going to talk about. आप फर्स्ट लाइन से एंटिसिपेट करते हो कि ऑथर किस चीज की बात कर रहा है पूरे पैसेज में. I mean, देखो ये पूरा पैराग्राफ इज अ in a nutshell what is happening with us Indians. And my father is he's really good with Hindi, okay, and the irony is unhi ki beti is an English teacher, so and he makes fun. He says kya English kya hai ye, देखो हमारे हिंदी में तू तुम आप we have all these words, सिर्फ इंग्लिश के एक वर्ड के लिए you, और you सिंगुलर भी है प्लूरल भी है. It's such a confusing language. Is it not weird? I mean, when you, my daughter is learning to read, and when I try to teach her the pronunciation of words, she's utterly confused. Because CH को हम क पे pronounce करते हैं, च पे pronounce करते हैं. She's confused how to read that. So, certainly English is a weird language. उसका पहला example आपने passage में देखा है with the usage of word you. Okay, so you can be singular, plural, both. One person, two people, many people. अच्छा, respect में भी you बोलोगे, छोटे बच्चे को भी you बोलोगे, बड़े लोगों को भी you बोलोगे. एक word सब लोगों के लिए. On the contrary, अगर आप details में जाओगे, singular, plural दोनों same कैसे हो सकता है? It has to be different. So the author is in the second paragraph comparing English to other two languages and showing how weird is English by using only one word you for singular plural both. इस पेज तक किसी को डाउट है कुछ? It is certainly relatable. It is funny, it's weird. Certainly that's the claim made by the author here. Okay? अब देखो, एक बात समझना, फ्रेंच है, हिंदी है, इंस्टेड ऑफ दीज टू कोई और लैंग्वेजेस का भी एग्जाम्पल देता ऑथर, तो भी मेरा मेन आर्ग्यूमेंट दैट इंग्लिश इज वियर्ड remains intact. And that's exactly why focusing on arguments is so necessary. Argument है English is weird. उसको support करने के लिए author ने you का example दिया और बाकी languages से compare किया ये बताने के लिए कि you का जो example है ना that makes English weird. Now the next page could have more things that makes English weird, could also continue talking about you. I'll not tell you what happens later on, but then the entire passage could be about only you or could be about other words in English that equally make English weird with reference to other languages. Let's go to the next page and read that, everyone. Second page, everyone. Read and send me a done. Ah, yes, Raghuram, correct. My first question, is this line a neutral line, a positive line, or a negative line? What's your answer? The highlighted line in brackets.
Positive, negative, neutral. What is it? Shashti says negative, neutral, negative. It's absolutely negative. I'll tell you how. समझो लाइन का मतलब, पहले हिंदी में समझाती हूँ फिर इंग्लिश में समझाऊंगी. यू एक कंफ्यूजिंग वियर्ड वर्ड है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए. देयर इज अ होल. होल मतलब एक फ्लॉ है यू के यूजेज में इंग्लिश में. तो जो लैंग्वेजेस इंग्लिश से ही स्टेम आउट हुई, इंग्लिश से ही इंस्पायर हुई, वो एडजॉइनिंग लैंग्वेजेस सबसे पहले कोशिश करते हैं इस यू के फ्लॉ को खत्म करने में, इसको रेक्टिफाई करने में. क्योंकि यू का फ्लॉ है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू यूज करना. तो जो लैंग्वेजेस यू से स्टेम आउट हुई थी उन्होंने ये ट्राई किया कि हम इस यू के फ्लॉ को खत्म करते हैं, एक वर्ड रखते हैं सिंगुलर के लिए, एक वर्ड रखते हैं प्लूरल के लिए. जैसे हिंदी में देखा, फ्रेंच में देखा, और सारी लैंग्वेजेस में भी इस यू के फ्लॉ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है. इन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस लाइन नॉट अ न्यूट्रल वन. इट्स अ क्रिटिसिज्म टू द यूजेज ऑफ यू इन इंग्लिश. इट सेज देयर इज अ होल, there's a flaw in the usage of you in English because it is used for singular and plural both. So the author says that other languages that have stemmed out of English have first and foremost tried to fix this flaw by using two different words, one for singular and the other for plural. Makes sense? Why is that line not a negative? Using the word you whole says there's a flaw. एक कमी है यू के, गलती है यू के यूजेज में जिसको फिक्स करना चाहिए, जो बाकी लैंग्वेजेस ने किया है. ठीक है, आगे पढ़ो, पूरा पेज पढ़ के सेंड मी डन. यू सी, जो इस पैराग्राफ के एंड में you can take both singular and plural verb and that's why English is a very funny Indian language. Yes, Shrishti. अब देखो आगे इसी होल को, इसी फ्लॉ विद द यूजेज ऑफ यू को ऑथर ने डिफाइन किया है कि जो बाकी लैंग्वेजेस, व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका? लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल. ठीक है, सो पापुआ न्यू गिनिया में जो लोकल लैंग्वेज यूज थी उन्होंने उसको इतना डिफाइन कर दिया कि सिंगुलर प्लूरल में भी दो लोगों के लिए यू का एक अलग वर्जन है, तीन लोगों के लिए यू का एक और अलग वर्जन है. तो उन्होंने इतना परेशान हो गए वो यू के सिंगुलर प्लूरल के सिमिलर यूजेज से कि उन्होंने उसको बिल्कुल रिफाइन कर दिया कि एक पर्सन, दो पीपल, तीन पीपल, तीनों के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करेंगे. सो यू सी दीज एग्जाम्पल्स. फॉर टू पीपल दिस इज द वर्ड, फॉर थ्री पीपल like you two fella, you three fellas, that's the word that you use. Okay, Shrishti, pigeon is a simplified grammatical form. देखो जब इंग्लिश पीपल को दूसरे, जैसे इंडिया में आप देखो, ठीक है, इंडिया में अगर उनको हमसे कम्युनिकेट करना था तो वो सारी प्लेसेस जिनका नाम उनसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता था उन्होंने उनका नाम चेंज करके कुछ और कर दिया ताकि वो उसको प्रोनाउंस कर सके, और अपनी लैंग्वेज लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने सिंप्लीफाइड इंग्लिश यूज करना स्टार्ट कर दिया सो दैट लोकल लोग उनकी लैंग्वेज को कैच करना स्टार्ट करें. सो पिजिन इज अ सिंप्लीफाइड ग्रामेटिकल यूजेज ऑफ इंग्लिश. तो बहुत ग्रामर को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करना, एक सिंपल तरीके से यूज करना ताकि लोकल लोग उस लैंग्वेज को कैच करें और बोलने लगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स पिजिन हियर? पिजिन इंग्लिश इज सिंपल इंग्लिश, लिमिटेड वोकैबुलरी, लिमिटेड ग्रामर, ज्यादा नाटक नहीं है. दैट्स पिजिन इंग्लिश. Okay, let's move to the next page, everyone. Here you go. Next page, read this and send me a done. This is an important paragraph. इस पूरे पेज पैराग्राफ का टोन बताइए. इफ यू नो द टोन, you'll know what exactly the paragraph talks about.
या फिर एटीट्यूड बता दीजिए ऑथर का इस पूरे पैराग्राफ में. व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड? Attitude of the author here in the first paragraph. Confused is a polite term, Vinayak. Appreciating the local language? No. No, no, no. More guesses, anyone? Author का attitude क्या है इस पूरे paragraph में? Mood क्या है? Urgency? I'll tell you. The author shows the frustration of people, criticism, the frustration to fix something that's wrong with the language. Would you agree? उन्होंने वेट ही नहीं किया. उन्होंने बोला जो मिलता है ना मुझे मैं उसको फिक्स कर दूंगा. तो जैसे ये मूवी का एग्जाम्पल है, it is critical. He is critical of the usage of English and the flaws in it. And there's an urgency to fix the flaw. He is very frustrated and it's showing example of how frustrated other people are कि भैया ठीक करो इस यू के फंडा को. Okay, so he's critical. His mood is to denote frustration that people have because of the incorrect usage of you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next page पढ़ लो, next paragraph पढ़ लो. I am sure thou और you आपने पढ़ा होगा singular और plural के लिए. अब वो भी खत्म कर दिया ना. Guess what could be a reason for ये thou को eliminate करना, बोलना ये old English है. अब हम सिर्फ यू यूज करेंगे, एक ही वर्ड यूज करेंगे सिंगुलर प्लूरल के लिए. इंग्लिश में 2 वर्ड्स थे सिंगुलर प्लूरल के लिए, दाउ फॉर सिंगुलर, यू फॉर प्लूरल. क्यों उसको एक बना दिया गया? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? ही वांट्स सम सॉल्यूशन, सिमरेला. करेक्ट. बताइए मुझे, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर रिमूविंग दाउ एंड यूजिंग वन वर्ड ओनली? कौन बताएगा? टू अवॉइड इनकन्वीनियंस. ऑफ कोर्स, कि कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई, सिंप्लीफाइड कर देते हैं लैंग्वेज को. सिंप्लीफाई तो हुई नहीं, द कंफ्यूजन रादर इंक्रीज्ड. Right? So the confusion in fact increased because singular plural mein when I have we or for example I, we have singular plural. But then you ke liye singular plural kyun nahi hai? There was an idea of making English simplified. Yes, it was spoken by many. It was easier for others to understand. Remember pidgin word? Pidgin English was necessary, and that's one of the reasons quoted in the previous paragraph. Why? It was necessary to make English convenient. That led to removal of the older words of singular like thou and other words and make it as one. But of course, ultimately it did not make English easy to understand. It made it complicated because kids otherwise would not get it. Chalo, आगे बढ़ते हैं. Next page. Read this and send me a done. Now, by the end of this paragraph, अभी तक पूरे पैसेज का टोन क्या है?
Okay. Critical. Others? What is the tone of the passage till now? No. All of you are wrong. That's not the tone of the passage till now. No, it's not critical. I'm sorry. Think. This paragraph changes the whole tone. Sarcastic? No. नहीं, बिल्कुल गलत. अभी तक पैसेज का टोन क्रिटिकल चल रहा था, इस पैराग्राफ के एडिशन से उसका टोन चेंज हो जाता है. Not confused. No. No, sarcastic नहीं है. It's analytical. I'll tell you why is it analytical. Yes, Raghuram, it is analytical. I'll tell you why is it analytical. Now the author is trying to analyze what exactly was the reason of the continued usage of you for singular and plural. He's analyzing it. Yes, Sakshi, sorry. Yes, Riya, it is analytical. He's analyzing what is the reason for the usage of the removal of thou and the continued usage of you for singular and plural both. He's thinking, he's contemplating. Agreed, everyone? Last page तक it was critical. Now he's trying to think क्या reason हो सकता है. Previous page में भी एक reason था, इस page में भी जैसे we. ये देखो राजाओं की language नहीं होती है, हम नहीं करेंगे. So that's a similar language for queen. We are not amused. We means herself. But then क्यों नहीं बोलते थे वो I am not amused? उनको लगता था I तो सब लोग यूज करते हैं, हम क्या अलग यूज करेंगे, हम तो सुपीरियर है ना बाकी लोगों से. तो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए they started using we and the Indian king started using hum for one person. Similarly, वो जब अपने आप के लिए plural use करने लगे तो वो सामने वाले के लिए भी plural use होने लगा. That is one of the probable reasons the author is quoting. Okay, Shreya, that's true, but ultimately is he, देखो याद रखना, पर्पस क्या है अभी तक के पैसेज का, वो आपको टोन बताएगा. All those people who marked critical, अपने आप से देखो ये दो क्लोज ऑप्शंस आ गए हमारे पास. अब हम कैसे एलिमिनेट करते हैं क्लोज ऑप्शन टोन में. देखो पैसेज लिखने का पर्पस क्या है, इंग्लिश में गलती निकालना या ये रीजन ढूंढना कि इंग्लिश क्यों यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज करता है. व्हाट इज द पर्पस. जो पर्पस होगा वो आपका टोन हो गया. अगर पर्पस है इंग्लिश में गलतियां निकालना तो क्रिटिकल टोन हो गया. अगर पर्पस है ये निकालना, ये आइडेंटिफाई करना कि क्यों यू हम सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं, that becomes analytical. I hope there's clarity between how to differentiate between two close options, everyone. Exactly. Yes, Muskan. She would have been placed at the same pedestal and of course she wouldn't want to be. So she started using we and then Indian kings followed the trail. Okay? Yeah, Shreya. If it is finding reasons, then it's going to be analytical. तो हमेशा जब भी close tones में confused हो, apply this logic. पर्पस क्या है, कमी निकालना या एनालिसिस करना, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड योर आंसर. वो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. रीड दिस पेज एवरीवन. ब्रैकेट वाली लाइन में व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच. What is the figure of speech? Alliteration. No. No, 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 not alliteration. Acha, with yous, yins and you all. Okay, still giving you liberty. Analogy. Ashi, is it analogy or is it metaphor?
Personification, certainly not. Preeti, is it analogy or is it metaphor? No, not personification. नहीं, personification नहीं है, it's a metaphor. देखो personification क्यों नहीं है? आपको लग रहा है हमने इन फीलिंग्स को अंकल से रिलेट करी है? देखो, सी अंडरस्टैंड, personification क्या होता है? Personification is when a human characteristic is given to a non-human thing. When a non-human thing behaves like a human. Who is behaving like a human here? No one. It cannot be personification. Rather, it's a metaphor. उन्होंने बोला है इन वर्ड्स का यूजेज कुछ कुछ वल्गर है, लेकिन अम्यूजिंग भी है. कैसा? वैसा ही जैसा आप अपने क्रिसमस के टाइम में ड्रंकल अंकल को याद करते हो ना, आपको हंसी भी आती है उनको याद करके, बट देन आपको थोड़ी सी अनईजीनेस भी होती है. यू फाइंड इट अम्यूजिंग येट अनईजी बिकॉज वो अंकल इज ड्रंक एंड मे बी ही टॉक्स क्रैप, सो यू आर अम्यूज्ड. आप अपने आप में हंस लेते हो, बट यू विल नॉट टॉक अबाउट हिम टू अदर पीपल बिकॉज इट्स शेमफुल मे बी. उसी तरीके से इन वर्ड्स का यूसेज है. There's an indirect comparison between the usage of such words and calling it vulgar, tad bit vulgar, to the drunkle uncle during Christmas. Okay? ठीक है. I hope everyone understands. Why is it not personification? सिर्फ एक पर्सन का नाम दे देना कि ड्रंकन अंकल है, वो पर्सोनिफाई नहीं कर सकता इस चीज को. आगे पढ़ो पेज. One smiles at their mention, like these words. You would smile, but you would not use it. अब देखो ये लाइन even more contemplating टोन लेके आ जाती है. He is contemplating. क्यों? क्या रीजन है? He is analyzing. He is trying to think. So these tones could be close here. It's a metaphor, Muskan. And now in the last paragraph you see print and verbal language. Verbal language can be more casual. Print, and that's why we see the abbreviations being used so much. I'll do it. But when you write, you avoid writing words like I'll with apostrophe, right? You write I will do it. So with spoken English, it's very casual. With written, it becomes permanent. And you are thus very, very careful with what you're writing, with the words that you're choosing. और इसीलिए ये difference है, calling it a tad bit vulgar. Let's move to the next page, everyone. I think that's the second last page. Yeah. No. Here you go. Read this. Yeah, like wanna do it. इस लाइन का मतलब मैं समझाती हूँ आपको. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. लैंग्वेज में यू क्यों चेंज नहीं हुआ सिंगुलर टू प्लूरल? दिस इज वन ऑफ द रीजंस कोटेड व्हाई लैंग्वेज इंग्लिश में यू सिंगुलर प्लूरल सेम रहा. अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं प्रिंट फॉर्म में, वो परमानेंसी डिनोट करता है, लाइक द प्रीवियस पेज. And changes in language is associated with being uncouth. Uncouth is mannerless. You are somebody who wants to revolt, जिसमें कोई तमीज नहीं है, जो बदतमीज है, जो
कंट्रोल से बाहर है. These are the kind of attitudes people would give you if you want to change the language in permanency in written form. You can do it while you speak, but you can't do it while you write. That is one of the reasons why language couldn't be changed for so many years. Okay, Manu, I hope you get it now. Continue with the page. सिर्फ अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो रिफाइंड इंग्लिश है, हाई क्लास इंग्लिश है, अननेसेसरीली ये वर्ड्स ला दिए गए ताकि डिफरेंस हो जाए हाई और लो में. वी आर नॉट अम्यूज्ड फॉर सिंगुलर. These are the reasons. Difference in the class, difference in language, difference in category, showing yourself superior to others. These are the reasons. Because अगर आप change लेके आते तो आपको ये words बोले जाते. See, read this line. To him, swam and blew, the ones we use were likely seen as the mark of low class. He said, मैं नहीं बोलूंगा ये words. मैं swimmed बोलूंगा, मैं blowed बोलूंगा. Okay, so the next paragraph is pretty simple. इसको आप skim कर सकते हो. Next page में चलते हैं जल्दी से. Here you go. Read this page, everyone. They became normal. क्योंकि आज हम blowed नहीं बोलते, blew, right? The class association. No, Muskan. So, ma'am, is the authority trying to tell us that because of some people trying to show themselves superior, this is one of the many reasons the author is contemplating. देखो, अभी तक समझो author ने किया क्या है. The author is trying to contemplate what are the reasons. He's trying to analyze what could be the reason for the possible continued usage of you as singular and plural. Authority, yes, this is more of an analysis. This page also is an analysis. One of the reasons is showing superiority. Two, the second reason could be making it simpler for other people to understand, like pidgin English. So there are many reasons the author is trying to identify what could lead to the continued usage of you being singular and plural. Okay? चलो, last page में चलते हैं जल्दी से. इसमें भी उसी का continuation है. I think this is the last page. Yeah. जल्दी से पढ़ो. Closure देखो passage का क्या है. Last paragraph say, can you say the author is critical in the whole passage? You saw the shift from criticism to analytical to
accepting in the whole passage, started from criticism. फिर बीच में the author then moved to analysis. And by the end he says a closure. तो ठीक है, जो भी है, analysis तो कर लिया, but जो भी है, language तो अपनी है. तो इस पे आपको you don't have to worry about it. Just let it be. Worry करने की नीड नहीं है. He is persuasive rather कि ठीक है, चलने दो जैसे. So the author started from criticism, went on to analysis, and then gives a closure to it by saying, we don't know what is the reason, just accept it however it is. He is accepting it. So that's the closure to our passage. So आपको summary of course समझ में आ गई. Using the example of you, the author is trying to analyze why is there this oddity in English, why is this weird usage allowed in English, because with other languages it's not allowed. And then he gives a closure by saying, okay, whatever it is, just accept it the way it is. Don't worry so much about it. टोन हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया. इसका टोन एनालिटिकल हो सकता है, इसका टोन थॉटफुल हो सकता है, इसका टोन कंटेम्पलेटिंग भी हो सकता है, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द रीजन. So I think analytical could be the best tone out of the remaining tones here. Now, one very important announcement, our last lab to CLAT starts 5th of November and that should happen every, just a minute. Okay, that I'll tell you that would happen 4 times a week. Will share the schedule with you probably by tomorrow. You have to attend the last lab because these are the classes which will help you with one-shot revision. Some concepts will be discussed along with revision, and there are plenty of practice questions, new practice questions that we'll bring for you. So if you are sitting for CLAT 2023, this is your one stop for your complete revision. And the last moment पे जो हमने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, उन सब के पैकअप के लिए this is one thing that you should attend. It starts 5th of November, every day at 9 PM. इसको आपको attend करना है. Make sure you've liked the video if you still haven't done that. Okay, and make sure you have subscribed to the channel. No, the timing cannot be changed. Neha. It's going to be happening at 9 PM only. Okay. All right. So subscribe to our channel if you still haven't done that. Follow us on BYJU'S Exam Prep Law Instagram channel, Facebook channel, Telegram. Download our app on Google Play. That should be all for today, everyone. I shall see you again next week. Till then, work really hard and read a lot, solve a lot of questions. अभी का टाइम आपके प्रैक्टिस के लिए सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है. श्रेया, क्या क्वेश्चन है? I think analytical and persuasive. You're right. That's exactly what I said, my child. तो my last few words. अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए. प्लीज फुल एफर्ट लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, आपकी क्या गलतियां हो रही है. यू शैल इम्प्रूव योर स्कोर्स. मुझे फ्यूचर क्लैट का पेपर हिंदी में ही चाहिए. इंग्लिश ठीक नहीं लगती, हिंदी में ज्यादा ऑफ कोर्स समझ में आएगा, लेकिन लॉयर तो इंग्लिश में नहीं आर्ग्यू करोगे जाके कोर्ट में, वहां हिंदी में नहीं आर्ग्यू करोगे, वहां तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इसीलिए इंग्लिश में पेपर होने वाला है. तो षष्ठी हमारे पास चॉइस नहीं, पेपर तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. Thank you so much everyone. Have a very good weekend. Work really hard. Read a lot. God bless you.